Today I'm starting the chapter along with NCERT. As I said that in the earlier section, we had only 4 or 5 concepts. In this, you will be having the importances and the elements, and each one of them can have a separate question on their own. So let us start with the book. This is a case study. Ford has always attracted and nurtured capable managers and technicians, but it has failed to do the same for change agents and leaders. So, as part of the automaker's cultural overhaul, Ford is embarking on a sweeping attempt to mass manufacture leaders. If we want to build an army of warrior entrepreneurs, people who have the courage and skills to topple old idea and who believe in change passionately enough to make it happen. Therefore, the company announced key changes in its senior management team as it continues to strengthen the locomotive business. To improve the operational fitness and accelerate a strategic shift to capitalize on emerging opportunities. In announcing the leadership changes, Ford's president said, very fortunate to have an experienced and executive team in place to significantly strengthen their business while building their vision of becoming the world's most trusted mobility company. The objective is to lead business to new levels of operational fitness, product and brand excellence and profitability. Ford views grassroots leadership as the best vehicle for creating successful business. तो जो ये अभी हमने पढ़ा है, this is about how a leader can entirely change, how proper guidance can completely change the scenario of the business. यहाँ पर और कुछ नहीं है. It is all about the role, and what they say is leadership should be there at the grass level. That means it shows how important it is to instill leadership qualities in all managers. The above example is telling about the importance of leadership. Business organizations have always given due respect to managers who are capable of leading others. A manager needs to use various ways to lead, motivate, and inspire the subordinates to communicate with them suitably. इसमें वो चारों elements आपके आ गए. Supervision, then leadership, motivation, as well as communication. And this is what we collectively call as directing function. यानी कि जब हम किसी को बोलते हैं कि हम उस चीज को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट करने का मतलब है टेलिंग द वे. डायरेक्ट वर्ड इज कमिंग फ्रॉम डायरेक्शन. तो जैसे हम बोलते हैं ही गेव मी द डायरेक्शन, उसने मुझे रास्ता बताया, तो रास्ता बताना. लेकिन यहाँ पर रास्ता बताने का मतलब है कई जगह साथ चलना, कहीं पर आपको सुपरवाइज करना, कहीं पर आपको जस्ट पीठ थपथपाना, कहीं आपको कम्युनिकेट करना. In the ordinary sense, directing means giving instruction and guiding people in doing work. In our daily life, we come across many situations, like a hotel owner directing his employee to complete certain activities, a teacher directing his student, a film director directing the artist how they should act. In all these situations, the directing is done to achieve some predetermined objective. But when it comes
to the management, when it comes to the organization, it expands. It also means instructing, guiding, counseling, motivating, and leading the people in the organization to achieve its objective. और वैसे मैं एक छोटी सी बात बताऊं कि this is there for every situation, not only that for it is only for the organization is part of everything. So directing is not mere issue of communication, but encompasses many elements like supervision, motivation, and leadership. It's one of the key managerial functions performed by every manager. It is a managerial process which takes place throughout the life of an organization. So what are the characteristics, features? First, directing initiates action. पहले हम लोगों ने कर लिया है कि प्लानिंग करना है, हमने ऑर्गेनाइज करना है, लेकिन जब आपने प्लान और ऑर्गेनाइज किया है तो यू नीड टू टेल, आगे आपको इनिशिएट करना है. A manager has to perform this function along with planning, organizing, staffing, and controlling, while discharging his duties in the organization, while other functions prepare a setting of action. Directing initiates action. क्या करना है? तो actual action will take place. It takes place at every level. ये आपका assertion and reason के अंदर आ जाता है. Every manager from top executive to supervisor performs a function of directing. It takes place wherever superior subordinate relationship exists. जहां आपके नीचे कोई है, आप डायरेक्ट कर रहे हो. Even in a small shop, the shopkeeper is directing his worker. So it will be always there where we have to take the command. It is a continuous process. Directing is a continuous activity. It takes place throughout the life of the organization, irrespective of people occupying managerial position. For example, Infosys, Tata, BHEL, HHL, and managers may change, but the directing process continues. Without direction, the activities cannot continue further. Abhi, there are some companies where the top level management is going to change, and these changes takes place over a period. Sometimes what happens is the people who are even they may be the owners, they step down due to health problems or due to any other problems, and definitely उनको कोई ना कोई तो compensate करता है, but जो direction है that would always be there. The person may change, but the direction will not change, the directing will not change. It flows from top to bottom. जहां आपका superior subordinate है, हमेशा superior is going to give the command to the subordinate. It is first initiated at top level, flows to the bottom through organizational hierarchy. It means every manager can direct his immediate subordinate and take instruction from his immediate boss. अगर एक कंपनी के अंदर the hierarchy is given in this manner, then he is going to direct this person, he is going to direct this person, he is responsible towards this, and he is responsible towards this. Authority to responsibility relationship. Now, why do we need? As we have already done, it guides towards achieving the common objective through directing. Managers not only tell the people in the organization what they should do, when they should do, how they should do, but also see that their instructions are implemented in proper perspective. In all your schools,
आपके सबके स्कूल्स के अंदर भी, इफ यू हैव सीन, तो स्कूल के अंदर क्या होता है, द प्रिंसिपल इज देयर, but the principal or group of management is not able to completely look after each and every aspect. So what do? They just appoint certain people at certain level and they instruct. लेकिन इंस्ट्रक्शन से नहीं होता ना, टाइम टू टाइम रिव्यू मीटिंग लेना पड़ता है, टाइम टू टाइम दे हैव टू सी देम, चेक देम, रैंडम चेक करना होता है, दे हैव टू सी वेदर दोज इंस्ट्रक्शंस व्हिच आर बीइंग गिवन आर फॉलोड और नॉट. This becomes an important factor in the efficient and effective functioning of the organization. So, why do we need? Very first, it helps to initiate action by people in the organization towards the attainment of desired goals. यानी कि जब सुपरवाइजर गाइड कर रहा है उसको, अपनी मतलब उसको सारी बातें समझा रहा है, तो देन द वर्कर विल बी एबल टू अचीव द टारगेट. जब उसे पता है कि मुझे ये काम ऐसे करना है, विद इन दिस पैरामीटर्स करना है, विद इन दिस मनी करना है, when he is having a clarity in his मतलब कि in his work, he would be able to do it. It integrates employees' efforts in the organization in such a manner that every individual contributes to the organizational performance. No organization runs on one performance. For example, a manager with good leadership will be in position to convince the employees working under him that individual efforts and team effort will lead to achievement of organizational goals. क्योंकि अगर organizational goals achieve होंगे तो personal goals भी achieve होंगे. एंड आजकल तो एक छोटी सी मतलब एक नया वो भी है कि many of the companies, in fact I should say not many but most of the companies are providing proper incentive when they are giving the feedback in the right manner. It guides employees to fully realize their potential and capability by motivating and providing effective leadership. Motivation we would be reading as a separate portion, so you would be able to understand कि कैसे लोगों को, क्योंकि उनके सामने there are two things. There can be a positive motivation. आपको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, आपको प्रमोशन मिल रहा है, आपको जॉब एनरिचमेंट मिल रहा है. देयर कैन बी अ नेगेटिव ऑल्सो, आपको डर बैठेगा, दोनों ही मतलब कि उस सिचुएशन में आप काम करोगे. Whereas an effective leader would always help you to do the better, क्योंकि आप इस कंपनी को छोड़कर कहीं और भी जाओगे ना, you would always be prepared for the next level. A good leader always identify the potential of his employees and motivate them to extract work up to their full potential. But again, leadership is a very big question, you know. In many of the companies, leaders are just the puppets. Directing facilitates introduction of needed changes in the organization. Generally, people have a tendency to, ये वाला पेपर में आया था बच्चा, this one, ये this came in CBSE and it was asked what was the importance. People have a tendency to resist changing. Effective directing through motivation, communication, leadership helps to reduce such resistance and develops required cooperation and introduce changes. For example, if a manager wants to introduce a new system of accounting, there might be resistance. But if the manager explains the purpose, training, motivates with additional rewards, the employees may accept change and cooperate. Now, I'll tell you for this a real example. When in India, computers were introduced, for the private sector, it was not a problem. The people were, you know, very happy to embrace. इतने सारे आपके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खुल गए थे, मतलब कि यू कांट इवन इमेजिन. अभी तो आई कैन से 99% of them are off. There were very, you know,
you can say a mushroom of computer institute. It wasn't the betterment. And they introduced different courses which could, skill the people, and people also learned. लेकिन public sector के अंदर problems आए, specifically in the banking sector. Now the banking sector के लोगों को लगा कि computers are going to hamper their growth, क्योंकि उस जमाने में कंप्यूटर को हम लोग कंप्यूटर से ज्यादा बोलते थे भाई कंप्यूटर वो होता है जो 10 जनों का काम एक साथ कर ले. नाउ दिस, ये जो वर्ड है ना, 10 जनों का काम एक साथ कर देता है, दैट बिकेम अ वेरी बिग टैबू, क्योंकि लोगों को लगा कि 10 जने की नौकरी गई. एक कंप्यूटर आएगा ऑफिस के अंदर तो और लोगों ने ये दिमाग में लगा लिया कि जैसे ही कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस होंगे देयर जॉब्स विल बी गॉन. एंड मेनी, मतलब कि देयर वर स्ट्राइक्स, देन there were meetings in which the government, the public, मतलब कि जो उनके मतलब टॉप लेवल्स थे, उन लोगों ने बुलाकर उन लोगों को एड्रेस किया, उनको बताया कि द कंप्यूटर्स आर नॉट गोइंग टू स्नैच अवे योर जॉब, लेकिन वो आपको हेल्प करेंगे. In fact, you will be given the training for this purpose, and when you complete it successfully, you would always also be rewarded. आपको अगर मतलब आप कंप्यूटर में ज्यादा अच्छा करोगे तो आपको रिवॉर्ड भी किया जाएगा. देयर वाज अ, मतलब कि बहुत इजीली चेंज हुआ, एंड टुडे वी ऑल नो दैट एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड. तो ये जो रेसिस्टेंस है, दीज आर वेरी कॉमन. Effective directing helps in bringing stability and balance in the organization, since it fosters cooperation and commitment among people and helps to achieve balance among various group activities and departments. जब आप काम कर रहे हो, एक टीम अगर मिल के काम करे, and it is also helping, not only खुद cooperate कर रहे हैं, it is also cooperating with other departments, then definitely there would be harmony. झगड़ा नहीं होगा, and झगड़ा नहीं होगा तो that itself will bring the balance. We don't need all these. Now we would be coming directly to elements of direction. This is the one which I said is very important. The process of directing involves guiding, coaching, instructing, motivating, leading the people in an organization. Jaise a supervisor explains a worker about operation, a mining engineer explains how safety precautions should be taken, a managing director declares shares a profit to the managers, a manager inspires her employee by playing a lead role in a performing team. Yani supervision, motivation, leadership, and communication. Now, in the supervision, you are only having the concept of supervision. Because earlier, we used to have what is a supervisor, what are the qualities of a supervisor. But now it is only the concept. The term supervision can be understood first, it is element of directing, and secondly as a function performed by supervisors in an organizational hierarchy. यानी कि जो एकदम वर्कर्स के ऊपर आपके आ जाते हैं वो. It being an element, मतलब एक तो हो गया वो फंक्शन और दूसरा एन एलिमेंट, यानी कि हर एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज कर. Supervision being an element, every manager supervises his subordinates. That means it is the process of guiding the efforts of employees and other resources to accomplish the desired objective. It means
overseeing what is done by the subordinate and giving instruction to ensure optimum utilization. मतलब दो सुपरविजन के हम दो मीनिंग निकालते हैं. एक एज एन एलिमेंट जहां हर सुपीरियर को सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज करना, और दूसरा सुपरवाइजर स्पेसिफिकली वो जो है जो कि आपके वर्कर्स के ऊपर है, वो स्पेसिफिकली वो जो कि वर्कर्स को बताएंगे क्या काम करना है. Supervision can be understood as a function to be performed by the supervisor, a managerial position in the organization at the operative level immediately above the worker. The functions and performance of supervisor are vital because he is directly related with worker, whereas managers have no direct touch with bottom level workers. यानी कि सुपरविजन एक तरफ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट के रिलेशन में भी है, एट द सेम टाइम सुपरवाइजर हम जो ऑपरेशनल लेवल में काम कर रहे हैं उनके लिए हम बोलते हैं. नेक्स्ट इज इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो थ्रू द सुपरविजन की वो क्या क्या काम करता है. मीन्स ही इज द वन. सुपरविजन का मतलब होता है maintaining the day-to-day contacts, then acting as a link between the workers and managers, playing a key role in group unity, ensuring the performance of standard, providing the on-the-job training to the workers, leader मतलब कि यहाँ पे influencing the workers and also giving feedback to the workers. In a nutshell, I can say कि जिस पोजीशन में, नॉट ओनली द पोजीशन इन द हिरार्की, अगर एक सबऑर्डिनेट के ऊपर सुपरवाइजर है तो उसको देखना पड़ता है कि उसका जो सबऑर्डिनेट है जैसा वो कह रहा वो कर रहा है या नहीं. Sometimes he would be acting as an influencer, sometimes he would be the one. क्योंकि देखो जो सुपीरियर है उसके नीचे सबऑर्डिनेट काम करेगा, तो जो भी सबऑर्डिनेट काम कर रहा है, सही कर रहा गलत कर रहा, वो मैनेजमेंट तक पहुंचाना सुपरवाइजर का काम होता है. द कंपनी गिव्स अ सैलरी, लेकिन उसको सैलरी कितनी देनी है, प्रमोशन देना है या उसको नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देना है, दिस इज ऑन द सुपरवाइजर्स रूल. सो ही इज द वन हु इज इन बिटवीन. सेकेंड, मोटिवेशन. Motivation, it is an internal feeling. The case of Rashmi reveals an important fact of managerial. It is not always possible to get the best of work from employees merely by exercising formal authority. मतलब आप उनसे जोर जबरदस्ती करके नहीं कर सकते हो. A manager may come across highly committed and hardworking staff or lazy, evasive, सुपरफिशियल वर्कर्स. मतलब दिखावटी लोग भी हो सकते हैं, कमिटेड भी हो सकते हैं. he or she may wonder what to do with workers not willing. कैसे काम करवाया जाए? तो साइकोलॉजिस्ट से इट इज मोटिवेशन. मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट. इंड्यूसमेंट मतलब उनके अंदर उस एक्ट को जगाना. To stimulate them to work. In the context of an organization, it is the process of making subordinate to act in a desired manner to achieve certain organizational goals. और इसके हमारे they are not there, just I'm telling ये मतलब कि this is not there in the syllabus. We have 3 interrelative motive. Motive मतलब a motive is an interstate that energizes, activates, and moves. Motivation is the process of stimulating people to accomplish that work. And motivators, वो जो आप उनको दोगे. मोटिव क्या है? हम कहते हैं भाई इस चोरी के पीछे मोटिव क्या था, उसका मकसद. एंड मोटिवेशन मीन्स किस तरीके से वो उस काम को करेगा, उसके लिए उसे स्टिमुलेट करना.
जैसे certain times your parents will be giving you extra money, certain times they will be giving you thappad, certain times they might be giving you some other benefits, and motivators होते हैं वो, ये जो थप्पड़ वगैरह ये सब motivators. Motivation is an internal feeling. If I want to work, then nobody would stop me. But if I don't want to work, nobody can push me. I have so many students. बड़े सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मैं कितना मर्जी कह लूं, they don't understand it. Means certain times I even feel, insulted, hurt, because उनको कोई फर्क नहीं पड़ता. In the but at the same time there are so many students when we tell them about what, मतलब कि आप इस ये करोगे तो ऐसा होगा, so they have this internal desire, the urge, the aspiration, मतलब they change their attitude. I've seen students who are बिल्कुल lethargic थे, जिनको जिंदगी में कुछ भी नहीं करना था, today they are achieving मतलब कि they have achieved or they are achieving. So this is very internal feeling which cannot be, हम सिर्फ externally उनको बोल सकते हैं, लेकिन हम उसको, internal feeling is only internal. It produces goal oriented behavior. जैसे किसी कंपनी में किसी इंसान को प्रमोशन मिला, तो if the employee is interested in promotion, वो अपने उस बिहेवियर को, उसको मतलब अगर उसको लगता है कि भाई आई एम गोइंग टू गेट प्रमोशन इफ आई डू द वर्क, तो ही वुड उस प्रमोशन को पाने के लिए वो काम करता है. Motivation can be either positive or negative. I have already told you this thing many a times, that there can be positive also, pay promotion recognition, even negative also. Stopping the increment, threatening, giving a notice period, they are negative motivations. In many of the companies, when you join, in all the companies, whether you are in public sector or private sector, first 6 months or 1 year, you are put on a probation period. And in the probation period, आपको judge किया जाता है. And at that time, there are many negative motivation, like you may not be continuing your job अगर आप job के performance को अच्छा नहीं दिखाते हो. And that performance मतलब कि includes your regularity, discipline, the way of working, the way of approach, everything. So naturally कि वो motivation होता है कि भाई मेरा जो है, मेरी job जो है, that should be assured. ऐसा नहीं कि मुझे नौकरी से निकाल दे. So what people do is they try to work. That is आपका negative motivation. Motivation is a complex process because it is depending on individual to individual. I cannot say कि the motivation what I have given to this person might be equal to another. Some people general motivation करो, उनको थोड़ा सा समझाओ, they understand. Some of the people, unless and until they don't go and ditch, मतलब कि fall into a muddy ditch, they don't understand. कुछ को तो आप समझा सकते हो, कुछ जब तक वो खुद भी कीचड़ में ना गिर जाते वो नहीं समझते. They come out, अब क्या करें? So you cannot expect कि आपने जो motivation दिया है, वही जो motivation जो आपने दिया है एक को, that would be helpful to everyone. We give the motivation to everyone. In the company, there are certain schemes, but not everyone wants to take them. So this is basically the human need. It is stimulating your behavior. और behavior को हम लोग जो है नहीं समझ सकते हैं. We cannot understand it.
how we can change others perception. आजकल क्या है, पहले क्या होता था कि मोटिवेशन करने के लिए ओनली देयर वर टू वेज, एक वो पॉजिटिव नेगेटिव। आजकल दे हैव केप्ट सो मेनी इंटरनल हिरार्की रख दी है। देन देयर हैव बीन मीटिंग्स आल्सो जहां पर दे आर पार्टिसिपेशन इज अलाउड, उनको एनकरेज किया जाता है, उनको टीम बिल्डिंग में दिया जाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाता है। सो मोटिवेशन इज नाउ अ वेरी बिग, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट, those who are working, they are under pressure, and unless and until they are not given the motivation, they would not. Now actually we don't have importance, so I'm just going to take up in the only on the larger ground. It helps to improve performance level of employees as well as of the organization. As I said, when a person is satisfied, he or she would always perform better. In many of the companies earlier, incentive schemes were not there. Now, whether you are working in a PSU or in an MNC, everywhere you have one motivation के लिए उन लोगों ने क्या रखा, टारगेट, मतलब उन्होंने रखा हुआ है टारगेट बेस्ड इंसेंटिव. So every person wants to achieve the target. It helps to change negative or indifferent attitudes of employee to positive attitude so as to achieve organizational goal. भाई अगर रिवॉर्ड दिया जाएगा तो उसके दिमाग में वो जो एक बना हुआ है कि मेरी कंपनी मुझे कभी तारीफ नहीं करती है, दैट मे स्लोली गो. इट हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर. दैट इज बिकॉज अगर कंपनी के अंदर ऑलरेडी दीज पॉलिसीज आर देयर, the people may not look for jobs. But on a very personal level, every person normally after 4 or 5 years try to shift and learn new parameters. लेकिन फिर भी कोई भी 2 साल में 3 साल में नौकरी छोड़कर नहीं जाएगा. Because if the company is providing you the salary, suitable incentives, then why the employee should think of leaving the job? There are so many companies जहां पे लोगों ने ज्वाइन किया एंड दे रिटायर्ड, दे लेफ्ट ओनली आफ्टर रिटायरमेंट. मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटेरिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब अगर आपके ये सब आपके जो है, these are all, these will be coming in your बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के अंदर भी आता है. भाई अगर काम करने के लिए कोई मजा नहीं है, कंडीशंस नहीं है, कलीग्स अच्छे नहीं है, सुपरवाइजर्स अच्छे नहीं है, तो हम छुट्टी मारेंगे. बट इफ देयर इज सम प्लेजर इन वर्किंग, वी वुड डू. मोटिवेशन हेल्प मैनेजर्स, जैसे हमने ऊपर एक वो एग्जाम्पल पढ़ा था कि जब मैनेजर ने लोगों को समझाया कि उन लोगों को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी और जो सक्सेसफुली करेगा उनको जो है दे वुड आल्सो बी रिवॉर्डेड, तो दे वर्क. सो इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस द न्यू चेंजेस. Now comes the most important part of this particular chapter, that is Maslow's need hierarchy theory of motivation. And when this comes, as that day I told you, you need to make this positively. आपको ये बनाना पड़ेगा. Maslow was a psychologist. एंड उसने जो है, मतलब वो हमेशा, हम लोग साइकोलॉजी जहां पर भी पढ़ाते हैं ना, हम इस चीज को हमेशा रखते हैं कि मैस्लो की एक थ्योरी है जो ये बोलती है कि हम इस दुनिया में जब आते हैं तो वी हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस व्हेन वी वांट टू. चाहे वो एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, बच्चा भी सर्टेन थिंग्स चाहता है. हर इंसान इस दुनिया में क्या चाहेगा, रोटी कपड़ा मकान चाहेगा. हर एक इंसान चाहेगा कि ही शुड बी सेफ और सिक्योर. हर एक इंसान चाहेगा ही और शी शुड बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी. हर एक इंसान ऐसा, मतलब कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखना चाहेगा. एंड हिज और हर ड्राइवन कैपेबिलिटी, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. कोई भी ऐसा नहीं होगा.
अगर आप मूवीज को भी देखोगे, मतलब कोई ऐसी मूवी जिसमें इंसान जो है मजबूरी में चोर बन गया, मजबूरी में बदतमीज हो गया। आपके इंग्लिश के अंदर एक चैप्टर है रैट ट्रैप, मैं आज ही करवा रही थी वो चैप्टर। तो अगर आप रैट ट्रैप को देखते हो, तो रैट ट्रैप के अंदर वो जो पेडलर होता है, उसका बिलोंगिंग नीड्स एंड साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरे नहीं होते। उसको खाना, पीना, शेल्टर, ये सब चीजें नहीं मिलती हैं, और इसीलिए वो उसे लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो मतलब कि रैट ट्रैप है, एंड ही इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एनीवन। इसीलिए जब वो क्रॉफ्टर के घर जाता तो वो चोरी करता है। There are some basic in the hierarchy and corresponds. The first is basic physiological, यानी कि हमारी बॉडी के certain needs. You are hungry, you are thirsty, you need shelter, sleep, sex, or some examples. This word was removed from CBSE. This is an old book, so it is there. I'm telling you. ये इसके ऊपर controversy भी हुआ था. इन द ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट, मतलब ये तो हमारे बेसिक नीड्स है, हमें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, हमें कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा। एंड इन द ऑर्गेनाइजेशन इट मींस द बेसिक सैलरी जो हमें चाहिए, यानी कि जिस तरीके से इंसान के शरीर को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, इंसान जब नौकरी करता है तो उसे सैलरी चाहिए। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, these needs provide security and protection from physical and emotional harm. Like we run towards our parents, कि कोई हमें इमोशनली या फिर कोई हम चाहते हैं कि हमें कोई बचा के रखे। In the society, we need the police should protect us. In a country, we think that the government should protect us. Similarly, job security, stability of income or pension plans are ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमें प्रोटेक्शन मिले, हमारी नौकरी को यूं ही कोई ना निकाल दे। वी आर गेटिंग अ पेंशन व्हेन वी रिटायर। एफिलिएशन एंड बिलोंगिंग, यानी कि द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। घर के अंदर रहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो यू नो व्हाई वी से सो मेनी थिंग्स अबाउट लव मैरिजेस, क्योंकि उसमें हम एक्सेप्ट नहीं करते। when marriages take place within two different communities, we start blaming each other. Like if you have seen the movie Rocky and ye belonging ye to hai. When you are living in a society, you want your friends, your relatives, or the people around you to look at you, smile at you. Similarly, when you are in a company, आप ये भी चाहोगे कि आपकी कंपनी आपको अपना समझे। इट इज बिलोंग, आपको ना ही सिर्फ काम दे रही है, सर्टन टाइम्स इफ यू हैव सर्टन प्रॉब्लम्स, इट इज अंडरस्टैंडिंग कि मेरी अपनी फैमिली है। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर, और ये सारे के सारे आपके अलग से भी पेपर में आता है और पूरा का पूरा भी आता है। इन टाटा मोटर्स, आई हैव हर्ड, आई हैव नॉट सी, मतलब मैं तो खुद तो काम नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने टाटा मोटर्स में सुना है कि जो टाटा है, ही स्पीक्स टू हिज एम्प्लॉइज एट द ग्राउंड लेवल, ट्राइज टू फाइंड आउट देयर प्रॉब्लम्स इफ देयर इज एनी। तो नेचुरल है कि जो लोग वहां काम करते हैं उनको भी वो मोटिवेशन है, दे फील दे आर पार्ट ऑफ कंपनी। आई नो 3 people who are working in Tata. Two of them are now 50s and one is in 27, but he doesn't want to leave. He says ki we get a very good belongingness. That's there. Esteem needs means self-respect, autonomy, status, recognition, and attention. In the company context, आपके काम को जो है प्रमोट, आपको प्रमोशन दिया जा रहा है,
आपको जॉब एनरिचमेंट दी जा रही है। ओ वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी नाइस। आप ये मतलब कि ये वाला कैटेगरी भी आप हैंडल करो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सेल्फ actualization needs. It is the highest level of need in the hierarchy. It refers to the drive to become what one is capable of becoming. That means कंपनी के अंदर पर्सनालिटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये भी आपके पास है। दे आर हैविंग द डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। कंपनी के अंदर डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स है जिससे कि जो एक ग्रोथ होती है वो हो रही। ये है आपका Maslow's theory, and if it comes in your exam, this figure has to be made. So this is what Maslow focuses. That people's behavior is based on their needs. आपको सैलरी मिलेगी, आप satisfied हो, you will not leave. These needs are in hierarchy. भाई पहली जो हमारी नीड किसी भी कंपनी में वो है सैलरी। फिर धीरे 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 हम अगले अगले पड़ाव पर जाना चाहते हैं। A satisfied need can no longer motivate people. Only next higher level need can motivate. ओके आपका जॉब एनरिचमेंट हो गया लेकिन प्रमोशन नहीं हुआ, तो आपका अगला मोटिवेशन आपकी कंपनी की तरफ से होना चाहिए प्रमोशन। सो इफ प्रमोशन इज देयर एंड आपकी ग्रोथ है तो डेफिनेटली यू विल वर्क। A person moves to the next higher level of hierarchy only when the lower need is satisfied. Maslow's theory focuses on the needs as a basis for motivation, and this theory is widely appreciated and recognized. However, some of his propositions are questioned on classification of needs and hierarchy, but despite this, it is still relevant because needs anywhere are very important. It helps the managers to realize the need level of employee should be identified to provide motivation to them. इसी में ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि भाई स्मिता एक कंपनी में काम कर रही थी, उसके फादर की तबीयत खराब हो गई थी, हर फादर्स मतलब कि हर फादर गॉट इल। नाउ हिज मतलब कि शी वाज उसकी जो है सैलरी बहुत अच्छी नहीं, बट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, मतलब उसके जो फ्रेंड्स थे दे ऑल केम एंड दे ऑल helped her to come out of this trauma. So which of the needs was fulfilled? तो ये आपका आता है affiliation belonging needs. Then इसी मतलब ऐसा ही और मैंने फिर उसी के अंदर क्वेश्चन था एक्सप्लेन अदर नीड्स इन दिस हिरार्की, तो आपको सारे एक्सप्लेन करते। Thus, question can be from each and every portion. बेसिक फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है हमारे शरीर के जो बेसिक नीड्स है। हमें भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हम काम ना भी करें, भूख लगती है, प्यास लगती है, लाइट जाती है तो हमें गर्मी लगती है, तो हमारे बेसिक नीड्स। सिमिलरली इन अ कंपनी वी नीड बेसिक सैलरी। In house, when we are living in a society, when we are living, we want a safe environment. Similarly, when in a company we want that there should be safety, हमारी job कहीं नहीं जा रही, there is a minimum period of notice. If we are leaving the job, we are getting certain benefits. Then in the society or in our family, people associate with us. In the same manner, office के अंदर भी people should be cordial. Then job enrichment, आपको recognition in the society, आपका एक जनरल आपको कोई फंक्शन में बुलाया जा रहा है, एंड देन आपको एक मतलब यू आर बीन told as a chief guest, you are given some esteem position. Similarly in the companies when you are given the job title, job enrichment आपको दिया जाता है, you are happy.
एंड व्हेन यू आर प्रमोटेड, व्हेन यू आर डेवलप, आपकी स्किल्स की डेवलपमेंट होती है, कंपनी में ऐसे पॉलिसीज हैं जो आपको ग्रोथ करने में हेल्प करती है, देन इट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. So these are the individual and organizational example of Maslow's need hierarchy theory. In the next, we would be doing under motivation. मोटिवेशन का मतलब तो हम समझ गए, एक इंटरनल फीलिंग कि हमें एक काम करना है. तो कौन सा काम होगा? तो नेचुरल है कि एक आप लोग करते हो बिकॉज यू, मतलब कि हम लोग काम करते हैं बिकॉज वी वुड बी गेटिंग सम मनी, और दूसरा हम करते हैं व्हेन वी नो दैट वी वुड बी गेटिंग सम रिकॉग्निशन, and that we divide into financial and non-financial incentives, which is very, very important, which I had already done. Anything which would directly go into your pocket in the terms of finance is financial. Wherever you are going to get the benefit of some patting, some recognition, certificate, appreciation, that all comes under non-financial. So we would be doing that, and then we would move to the next one.